चलो मैं देख लूंगा उसको भाई, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके ठीक है डन। चलिए सर, आगे मतलब किसी का सेशन मिस हो रहा है तो दे कैन रेफर टू द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन, दैट इज द थिंग। अभी सब लोग आ गए? कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई बाकी है अभी आने? नो सर। वैसे पूछा नहीं है यार कि मैं बता सकता हूँ कि नहीं, तो मतलब उसकी घर में प्रॉब्लम है अभी। हाँ बताती है। ठीक है चलो, विल स्टार्ट, नो इश्यूज। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। तो हमारा मॉड्यूल 2 और 3 हो गया था। Now coming to the module 4, that was the task planning. So everyone able to see my screen? यस सर। ठीक है चलो, तो ये टास्क प्लानिंग के ऊपर आते हैं। एक बार मॉड्यूल 2 और 3 क्विकली एक बार रिकैप कर लेता हूँ 5 मिनट्स। दिस वाज 2 वाज हाउ प्रिपेयरिंग टू यूज प्रोजेक्ट ऑनलाइन। ये आपने देख लिया था कि इसमें ये मेनू, इसका यूजर इंटरफेस ऐसे होता है, और ये जो है ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट ऑनलाइन में, दिस इज द, it works on all the type of web browsers mostly, and it is accessible through internet. इधर 2 was a small module, 3 में हम देखते हैं अभी। तो ये 3 जो हमने देखा था, इसमें हाउ टू क्रिएट एन एंटरप्राइज प्रोजेक्ट आपने देखा था कि हम यहाँ गए थे, एंड वी हैड कम हियर एंड वी आर गोइंग टू दिस, एंड यहाँ से हमने न्यू में जाकर 2 तरह के प्रोजेक्ट भी क्रिएट किए थे, राइट? एवरीवन रिमेंबर्स इट? कौन-कौन से प्रोजेक्ट किए थे बताओ? कोई बता सकता है? 2 प्रोजेक्ट करे थे टाइप। सर डेमो प्रोजेक्ट काइजन एक और टाइप सी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, फाइन। तो 2 टाइप के प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किए थे, टाइप सी और काइजन। अब ये जो हमने देखा था कि कैसे ओपन करना है प्रोजेक्ट, क्लोज करना है, ये था। तो मॉड्यूल 3 तक हमने कर लिया था कंप्लीट, राइट? नाउ कमिंग टू द मॉड्यूल 4, ये है। तो हियर हम टास्क प्लानिंग करेंगे। अच्छा, बिफोर आई गो टू टास्क प्लानिंग ना, आई विल जस्ट शो यू समथिंग एल्स, समथिंग इंटरेस्टिंग। ये यू गो टू दिस साइट projectplan365.com आर्टिकल्स प्रोजेक्ट फील्ड्स। तो यहाँ प्रोजेक्ट फील्ड्स पे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे टाइप ऑफ प्रोजेक्ट फील्ड्स दिखेंगे। यहाँ से शुरू हो रहा है। एक्टिव टास्क कौन सा है, एजाइल क्या है, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एक्चुअल ड्यूरेशन क्या है, एक्चुअल फिनिश क्या है, एक्चुअल ओवर टाइम कॉस्ट क्या है। तो ये इस तरह से बेसलाइन बजट क्या है। एनी डेफिनेशन यू हैव एनी कंफ्यूजन, यू कैन रेफर इन दिस। देखो यहाँ दुनिया भर की डेफिनेशंस दे रखी हैं सारी की सारी, विच एवर इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। ये रिसोर्स के रिलेटेड है, ठीक है? BCW आपने सुना होगा, वैल्यू सुना होगा, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल्ड, राइट? तो बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल्ड जो होता है, दैट इज नथिंग बट द प्लान वैल्यू। Budgeted cost of work performed is nothing but the earned value, and these are the enterprise custom fields. ये जो है, I'll do one thing, ये वाला जो लिंक है ना, ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट टाइम पे, this is the project fields, राइट? ये वाला लिंक एक मिनट, लेट मी सी, चैट में आप लोगों के लिए डाल दूं तो जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। सॉरी, ये चैट किधर आएगा इसमें? लेट मी जस्ट सी। चलो आई शेयर दिस पंकज सेपरेटली देन। एक मिनट, चैट ना, हाँ एक मिनट, जस्ट लेट मी पुट दिस लिंक हियर। हाँ, प्लान 365 आर्टिकल्स प्रोजेक्ट फील्ड्स, आगे चैट में लिंक आगे। यस सर। ठीक है, तो ये लिंक यहाँ से आप लोग ले लेना, देन यू कैन रेफर टू दिस इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन एनी ऑफ द डेफिनेशंस, या एक बार सारे डेफिनेशंस एक बार पढ़ भी लोगे ना, तो वो भी दैट इज आल्सो वर्थ स्पेंडिंग द टाइम। सो you will get
a lot of knowledge in that definitions. Just a minute. Sorry for the interruption. ठीक है, I'm just moving on to the next module. This is the module 4, which is task planning. तो इसमें we will discuss here जैसे planning आप MS प्रोजेक्ट से कैसे कर सकते हैं. पहला तो न्यू टास्क कैसे है, टास्क इन्फॉर्मेशन, रिकरिंग टास्क, टास्क ड्यूरेशन, डिपेंडेंसीज, क्रिटिकल पाथ, ये हम पूरा अभी डिस्कस करेंगे. ये चीज है. नाउ कमिंग टू ए न्यू टास्क. सो इंसर्टिंग ए न्यू टास्क आप कैसे कर सकते हैं. ये आपका ऑलरेडी जो बिल्ड शेड्यूल है. लेट मी कम टू दिस एंड हमने जो शेड्यूल बनाया था. ओके, लेट दिस लोड. डेमो प्रोजेक्ट केजन पे जाता हूं मैं. Yes, sir. एंड देन आई विल कम टू शेड्यूल हियर. शेड्यूल पे आके लेट मी कम टू. ठीक है, अब नाउ यू सी हियर क्या दे रखा है. टास्क में जाके टास्क से ऐड करना है. राइट. अच्छा, इसमें अभी क्लोज द प्रोजेक्ट, चेक द प्रोजेक्ट इन. क्या इशू हो रहा है इसमें. ऑप्शंस. So let me close the project, open it again. डेमो प्रोजेक्ट. अच्छा सॉरी, आई हैव ओपनड इट हियर ना. तो यहाँ पे ओपन कर रखा है तो उस वजह से यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा. लेट मी क्लोज इट हियर, सेव एंड चेक इट. तो इसको चेक इट इन यहाँ पे कर देता हूँ मैं. ठीक है, अब नाउ लेट मी क्लोज इट हियर एज वेल. लेट मी ट्राई टू ओपन इट अगेन. टास्क में ठीक है. अब आपके पास अवेलेबल हो गया. पहले मीनू ग्रेड आउट था, राइट. क्योंकि मैंने दोनों जगह खोल रखा था प्रोजेक्ट. तो ये चीज एक बहुत जरूरी चीज है, आपको याद रखना है कि जब आपका प्रोजेक्ट जो है चेक इट इन नहीं हुआ हुआ है एक जगह पर, तो कोई दूसरा भी उस प्रोजेक्ट को नहीं खोल पाएगा. और आप खुद भी उस प्रोजेक्ट को दूसरी जगह खोलोगे या तो ब्राउजर में उधर, तो आपको सारा मीनू ग्रेड आउट रहेगा, आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. नाउ आई विल एडिट दिस इन ब्राउजर. यही दे रखा है इधर. इसको एडिट करना है ब्राउजर में. इधर टास्क से टास्क इंसर्ट करना है. आई विल सिलेक्ट हियर वन रो. टास्क में जाकर इधर इंसर्ट कर देंगे. देखो ये टास्क यहाँ पर इंसर्ट होगी मेरे लिए. तो ये सबको दिख रहा है यहाँ पर. ये इधर मैंने इंसर्ट दबाया तो टास्क एक इंसर्ट हो गया. अच्छा, अब ये हमारे दो तरह के टास्क होते हैं. दिस इज नोन एज द टास्क मोड. वन इज द ये जो हैमर सिंबल आ रहा है ना, पिन सिंबल, आई कैन से पिन सिंबल. दिस इज ए मैनुअली शेड्यूल टास्क. मैनुअली शेड्यूल लिखा है ना. और ये जो है दिस इज ए ऑटो शेड्यूल टास्क. सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर इन माय शेड्यूलिंग, मैं हमेशा ऑटो शेड्यूल टास्क यूज करता हूँ. क्योंकि एमएस प्रोजेक्ट का पर्पस ही यही है कि आप ऑटो शेड्यूल टास्क यूज करो. अब मैं इसको लिख देता हूँ कुछ भी. टास्क 1 टेस्ट वरुण, ये मैंने डाल दिया इधर. सो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट ए टास्क हियर. इंसर्ट ए न्यू टास्क. ठीक है. नाउ ऐड और रिमूव प्रोजेक्ट समरी टास्क, ये भी आप कर सकते हैं. ये जो स्क्रीन पर दे रखा है ये इसका दे रखा है. ठीक है. तो नाउ आई विल फर्स्ट सेव डेमो प्रोजेक्ट कैजन पे ये भी काम करेंगे हम फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग.
publish. इधर दिख रहा है ना, save completed successfully, publish, जो आप publish complete. तो जब publish completed successfully आएगा ना, तब इसे close करके इसको check it in करना है. अब हम इस पे गए, open पे गए, microtext. Now I will say, show me the list of projects. Now I am coming to the desktop client. Demo project KSM. I will go to read and write. Say open. अब देखो मैंने जो टास्क 1 ब्राउजर में जो ऐड किया था वो यहाँ पर भी आ गया, राइट? ये मैंने इधर तो ऐड नहीं किया था, ब्राउजर में ऐड किया था, लेकिन मैंने पब्लिश कर दिया तो वो सेम टास्क मेरे को यहाँ आ गया. एवरीवन ऑब्जर्विंग दिस थिंग, राइट? ये अब प्रोजेक्ट समरी टास्क जो है, जो टास्क 0 है, दैट इज द प्रोजेक्ट समरी टास्क. आई वाज डिस्कसिंग अबाउट प्रोजेक्ट समरी टास्क इन द मॉर्निंग ना. ये प्रोजेक्ट समरी टास्क है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट का समरी है. तो जैसे मैं इफ आई गो टू द गैंट चार्ट फॉर्मेट, इफ आई टिक मार्क दिस ऑप्शन, प्रोजेक्ट समरी टास्क हट जाएगा. इफ आई टिक मार्क दिस, तो समरी टास्क, प्रोजेक्ट समरी टास्क आ जाएगा. So this you can write down, note down this thing, go to the Gantt chart format, take more project summary task and remove it, so project summary task आ जाएगा. Now next thing is show or hide group. ये तो ठीक है, this is fine, ये मैंने अभी डेमो कर दिया. Next thing is task information. Yes. Now अब task information में कैसे है? अच्छा, milestone का जो है, milestone, anybody knows what's a milestone? Before I move on to the definition, टास्क में और माइलस्टोन में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? जस्ट ए बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन. हाँ जी बताइए. So milestone is a stage where one of the phases of a project gets completed. So it's a milestone. That is also right. And मतलब mostly milestone is a task with zero duration. You can keep a task with zero duration as a milestone. Yeah, you may even mark a task as milestone, both the ways. And yeah, it is a phase of a particular for any project, it is a particular completion, yeah, beginning of a particular phase. That is what a milestone is. So that's exactly correct जो आपने बताया. But in addition to that, my answer is a little different. I would like to add further कि भी milestone is a task in a project which can be of zero duration, or it is something which can be anything else other than zero duration also, but you have to mark it as a milestone. वो कैसे करना है, we will see it now. So let me come to this. So milestone क्या है? Significant events that are either reached within the project, such as completion of a phase or a work, जो अभी हमने सुना है. So they are represented as task with zero duration, and they are represented in Gantt chart as black color diamond, right? Let me come here. अब मैं इधर आ गया. इधर Gantt chart तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, कैसे करूं बताओ? I'll come to this task पे जाऊंगा, scroll to task करूंगा, ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट शेड्यूल आ गया. इधर ये मेरा Gantt chart आ गया. अब मैंने इसको 0 days ड्यूरेशन यहाँ दे दिया, इधर 0 days दिया है. This milestone is a black color diamond over here, right? Ab this is what it was specifying here. The milestone are represented as tasks with the zero duration, and they are represented as a black color diamond. This is a black color diamond. Now you can record additional information about the task. वो भी कैसे होगा? Have detailed description and still maintain the task name, right? And information resides in the project plan, can be easily viewed or printed. ये हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि additional information एक task के बारे में कैसे करना है. That will come in the, अब जैसे ये task हो गया, ये alternate vendor identification is a task, let us say. और अब ये मुझे task, अब मैं इसको बहुत बड़ा यदि task नहीं लिख दूंगा तो मैं मेरे इसमें फिट नहीं होगा ना. जैसे मैं इसको यहाँ से I can increase the length, but then I won't get in print, I won't get this whole thing at once, right? Let me remove this timeline first. So what I will do, I will come here, I will double click on this task, and in this notes column I can write notes for this task here.
See, you can note this one thing here. ये जो I करके है ना, this is the indicators column. What this displays indicators that give different types of information about a task or a resource. This is the indicator column. Indicator column में इस टास्क के बारे में चीज पता मतलब इंफॉर्मेशन आएगी. जैसे if I come here, I'll double alternate vendor identification, right? अब मैं इसके नोट्स क्या डाल सकता हूँ? Let me put something like alternate vendor. क्या डालूं? Alternate vendor should not have been worked with our organization even once. Just I'm putting a note here. अब ये इतना बड़ा जो नोट है, मैं यदि इसको इधर डालूंगा ब्रैकेट में तो ये टास्क का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम पुटिंग इट इन नोट्स. आई विल से ओके. और इधर देखो मेरे पास एक सिंबल आ गया नोट्स का. कैन यू सी दिस सिंबल हियर? इधर नोट्स का सिंबल आ गया. alternate vendor will not be worked with our organization even. Just a example के लिए I have written. This is what the objective of notes is. So milestone and notes जो है ना इधर, you can record additional information what is saying. Detailed description will maintain the task name. अब now what is happening is I'm maintaining the task name as alternate vendor identification, and notes are also coming over here. And information resides and it can be easily viewed or printed. Acha, now how this can be printed, we will see. This is an interesting thing. Like, let me hide these columns. I'll knock this off. Let me come here. And let me come here, task, and then, or I'll go from here, scroll to task. ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट इसमें ही दिख रहा है. I will come to file, print. प्रिंट करना है तो आप एक्सेल में भी ऐसे ही प्रिंट करते हो ना, फाइल में जाके प्रिंट में जाके. तो I'll go to print PDF and this is how it is coming. नीचे legend आपको दिख रहा होगा. प्रोजेक्ट का नाम आ गया, डेमो प्रोजेक्ट केजन, डेट 11 अगस्त 2023. टास्क जो है वो ऐसे दिख रहा है. स्प्लिट जो है वो ऐसे दिखेगा. माइलस्टोन इज ए ब्लैक डायमंड व्हिच इज हियर. समरी इज लाइक दिस. दिस इज द समरी, राइट? प्रोजेक्ट समरी इज लाइक दिस. एक्चुअली दिस इज द प्रोजेक्ट समरी. समरी इसमें समरी एंड प्रोजेक्ट समरी आर बोथ सेम हियर. तो इनएक्टिव टास्क, इनएक्टिव माइलस्टोन, मतलब you have a variety of things here. This is the way you can get the printout here. That's what I'm trying to say. अब here if I go to page setup and go to view, if I go to print notes here, I say okay. अब क्या होगा, मेरे पास एक इधर देखो सेकंड पेज आ गया. यहाँ पर वो नोट्स भी प्रिंट होके आ जाएंगे. इधर आ रहा है एक्टिविटी 1 पे ऑल्टरनेट वेंडर आइडेंटिफिकेशन का ये नोट्स है. तो ये क्लियर हुआ सबको कि नोट्स जो है वो भी आप प्रिंट में लेके आ सकते हो, राइट? नाउ लेट मी कम टू द शेड्यूल एंड yeah. So right, any doubt associated with the task and the entering of the task and the task information in the notes, जो भी little part which we have covered? If there is no doubt in this, I will move on to the next topic. Otherwise, so this how the software is operating. ठीक है, I'll move on to the next part. Now, next is task information. Now constraint. Constraint में क्या होता है? The start or finish date देखता है task का, and the degree to which it can be rescheduled, right? So there are 3 types of constraints, right? One is flexible, semi-flexible, inflexible. अच्छा, अब 3 categories of constraint. ये आप note कर लो please, because this question I will ask you later on. What are the 3 categories of constraints? First one is flexible, second one is semi-flexible, third one is inflexible. Right? If anybody feels I'm going fast or slow, so you can tell me, matlab, so that I will move accordingly. Yeah, so there are 3 categories of constraints. First one is flexible, second one is semi-flexible,
थर्ड वन इज इनफ्लेक्सिबल. अब एक्चुअली में ये तीन कैटेगरीज कैसे होते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज. और ये सब कैटेगरीज कैसे होंगे, दैट वी विल सी इट इन द project schedule. In the task we will just have a look at those constraints in the task. Let me go to the, let's see, the you have noticed on three categories, no? First is flexible, second is semi flexible, third is inflexible, right? Now let me come here. So there are eight types of task constraints. Flexible दो तरह के होते हैं, semi flexible चार तरह के, inflexible दो तरह के. तो ये जो 8 है ये नोट कर ले. First one is as soon as possible. Bracket में you can write flexible. Second one is as soon as possible. Bracket में write this flexible. Then start no earlier than bracket में semi flexible. Finish no earlier than bracket में semi flexible. Start no later than bracket में semi flexible. Finish no later than bracket में semi flexible. Must start on bracket में inflexible. Must finish on inflexible. So once you have finished noting it, just let me know. I will actually demonstrate this in the software. Everybody done writing these eight types of constraints? No, sir. Okay. Yeah, sorry. Please continue. Finish writing this. Then we will see the practical impact. चलो ठीक है. Now let me come to the schedule. Okay, these are the constraints. Now task information may you have to go. How do I go to the task information? I have to double click on any of the task. This task information dialog opens up. See, notes में इधर आ गया ना, notes has opened up. I will come to general, predecessor, resources, advanced. These are all the tabs. Tabs में इधर constraint type आ गया. इसमें आ गया ना as soon as possible. These are the same 8 types of constraints जो आपने अभी note करे हैं. As soon as possible, as late as possible, must start on, must finish on, start no earlier than, start no later than, finish no earlier than, finish no later than. So these are the 8 types of constraints. अच्छा, अब क्या होता है? I have keeping as soon as possible. This is okay. So here the task is starting. If I'm introducing a new task, let me say task 2. And let me make it as a auto scheduled task, right? अब इसको करके I am putting it as a 5-day duration, any duration of that sort. Duration is put over here. इसमें मैंने क्या करा इस task को, I am double clicking it here. I have kept it as soon as possible, right? It is starting from the project start date. Project start date क्या है इसमें? August 11 है. Let me make this a little bigger here. Right, August 11 hai. Now what happens is, if I'm double clicking here, if I'm making this as late as possible, एक बार आप just observe this carefully. Observe this bar carefully, right? I'll say okay. See this bar shifts there at the end of the project. So it is starting as late as possible. So which we don't want actually, इसलिए as soon as possible ही हम रखते हैं अपने और schedules में. Other types of constraints are existing, but I never use them in scheduling. So
it's not advisable to use them also. अब मैं यदि एक चीज है, यदि if I'm using as soon as possible and if I'm giving a link between these two tasks, I'm coming here, I'm giving a link here. So this task will shift after this task, right? But now I'll say undo, just wait, Control Z, and this is here. This task is again at the original date of 11th August. अब मैं इसको डबल क्लिक करके मैं मस्ट स्टार्ट ऑन का कंस्ट्रेंट डाल देता हूं और ओके कर देता हूं, ठीक है? इधर देखो आ गया ना, इंडिकेटर आ गया. दिस टास्क हैज अ मस्ट स्टार्ट ऑन कंस्ट्रेंट ऑन 11th August 2023. Must start on is this type of constraint. Can anyone tell me? Inflexible. Must start on is inflexible constraint. Inflexible का मतलब ये हो गया कि वो किसी उसमें कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. तो यानी कि what will happen if I select these two tasks, if I link them, it is saying avoid the scheduling conflict. Now actually project is warning me. MS project is giving me a warning. If I say continue allow the scheduling conflict, तो ये हो रहा है बट ये टास्क यहीं पर ही रुक रहा है, ये इसके बाद शेड्यूल नहीं हो रहा है. You are able to understand what I'm trying to say? इसमें जैसे 11th अगस्त से 16th अगस्त है वो वहीं पर ही है, बट इन दिस केस 5 और 6 में इसके बीच में it is not honoring the predecessor and successor. That is what the difference is here. Now if I click on task 2, I make this as soon as possible. Now notice this bar here and notice these two dates here. It is 11th. I say okay, it has become September 1 to 7, and then this has also shifted from here to here. So far so good. Able to understand the concept, everyone? Yes, sir. Right. So that's the reason why in scheduling it is always a wiser decision to use the as soon as possible constraint. As soon as possible ही हम use करते हैं. बाकी के जो constraints हैं, those are a strict no. As per my understanding of project management, I would never use other constraints. हाँ, there is one thing. अब मान लो दिवाली पार्टी है या जैसे न्यू ईयर पार्टी है. अब न्यू ईयर पार्टी 31st को ही होना है, 31st December को ही होना है. In that case, you can use as late as possible. But in India, what happens is mostly 90% of projects we are scheduling it from the start date. We are not scheduling it from the project finish date. तो इसलिए उसको as soon as possible ही रखते हैं. चलो, so far this is fine. Let me move on to the next concept. अच्छा, next is about the deadline. A deadline is not a constraint, but it helps you monitor the task. How does the deadline help me monitor the task? Let me come here. Let me click on this. Right? Let me come to general. And without affecting the scheduling flexibility of the task, entering a deadline date causes project to display a deadline indicator on the chart portion. Right? For missed deadlines, project displays a deadline date for the task. So this is what the deadline is. Right? तो डेडलाइन जो है, डेडलाइन में कंस्ट्रेंट में फर्क ये है कि डेडलाइन जो है आपके इसमें आ जाएगा, इधर एडवांस में जाएंगे. डेडलाइन का जो डेट है, अब मैंने इस टास्क के लिए मान लो सितंबर 7 है ना, मैंने सितंबर डालूं 10 डाल देता हूं. चलो, September 10 is a Sunday. Okay, let me put it as 9. Right, I am putting the deadline as September 9. Okay, I will say okay. तो यहाँ पर एक आपको ग्रीन सिंबल दिखा, अभी सडनली आया. Yes, sir. राइट, तो ये पहले नहीं था. अब क्या होगा, अब यदि मेरा ये टास्क का ड्यूरेशन में 7 days कर देता हूँ. ओके, अभी सितंबर 9 क्रॉस नहीं किया ना, आई विल मेक इट एज 8 days. ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये एक सिंबल इधर इंडिकेटर में आ गया ना. दिस टास्क गो पास्ट इट्स डेडलाइन ऑन September 9. So here again MS project is giving me a warning. It is telling me that September 9 was my deadline date and it is going past its deadline date. क्योंकि ये सितंबर 11 हो चुका है. तो
डेडलाइन जो है, डेडलाइन आपके एक्टिविटी को नेल नहीं करेगा. इट विल नॉट नेल योर एक्टिविटी, इट विल नॉट स्टॉप योर एक्टिविटी, बट इट विल गिव यू a warning as in the indicator section, right? So this is what the deadline is. Okay, now next is the setting the task properties. Acha, one thing is there. Let me come back to the schedule. Let me open this. एक बार आप ये सब नोट कर लो. जनरल प्रोड्यूसर, रिसोर्सेज, एडवांस, नोट्स, कस्टम फील्ड. अब ये 1 2 3 4 5 6 हेडिंग्स नोट कर लो इन द टास्क इंफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स. So you can write it something like task information dialog box contains number 1 general tab, number 2 predecessor tab, number 3 resources tab, and number 4 advanced tab, number 5 notes, number 6 is custom fields. So this you can write it down. Predecessor. So everyone noted down these 6 things. General. Right. Okay. Fine. Good. Now, let me come here. Now task properties आप कैसे डालोगे? To add a milestone, create a 0-day task, add non-0-day task milestone constraint on deadline. ठीक है? Open task information window and then use task to mark as milestone. अब next क्या था ना? If you come here, let me cancel this. See, this task was a 0-day task duration. Let me come scroll to task. So this is showing this as a milestone. Now what happens is, I have another task also. This is starting on September 1 to September 11. I want to mark this task also as a milestone. But I want to keep the duration as कितने दिन का है? 8 days. That is also possible in MS Project. That's what I am trying to say here. I'll double click here. Advanced tab में गए. Mark task as a milestone. And I will say okay. See, now this has become as a milestone, right? Here also I'm getting as a black diamond shape. But this does not mean that this task is a 0-day duration. No. This task is having 8 days duration. It's having 8 days duration and it can still be marked as a milestone. So here if you see, this is the arrow from here to here. So everybody taking notes? Right? ठीक है. So this is about the milestone, what we have for a task. Now, this is the advanced tab. Okay, let me show it here. Come here. This is the advanced tab. Advanced tab में you can जैसे whatever the name जो implement and close है लिखा हुआ है ना, जैसे same name you will get it in the general tab also. Name तो मतलब जो आपने task के लिए type किया है वो वहाँ पर आ जाएगा. Advanced में भी वही आएगा. Then what is there? Deadline. We have seen what is a deadline here. What else is there? Constraint date. Constraint date also. जैसे what I had done here, I had given implement and close. Let me choose it as a must start on, and let me give it a constraint date of 10th August. Let us say. I will say okay. See, now it is giving me a warning. Cancel, no constraint date. Continue, but avoid the scheduling conflict. Continue. I must start on. I will say continue. I will say okay. I will say continue. I will say okay. See, now this I am getting a constraint date here. Let me just, yeah. Now this is moving before the project start date also, which actually doesn't make sense. So that's the reason why I always say कि constraints आपको use नहीं करनी चाहिए.
Right. This is the constraint date. Mark task as a milestone. This is what we have already seen. No? Now, next will be recurring task. Acha, now come to recurring task. Then task duration, task dependencies and critical path. अच्छा, अब recurring task कैसे होता है कि जैसे मान लो आपकी मीटिंग चल रही है. Let me just discuss the concept first. Then after setting the context, we will discuss about what is. जैसे अभी I have a, let us say, 20 activities schedule. अभी in this 20 activity schedule, I have a monthly meeting also या weekly meeting also. तो weekly meeting में मेरा कैसे होगा कि that weekly meeting is happening every Wednesday, let us say 11 a.m. या every Thursday, let us say 10 a.m. And if I add a task every time for that weekly meeting, it is an unproductive thing to do so. So what we will do is we will set it as a recurring task here. अब recurring task कैसे set करते हैं? That we will just see. These are what tasks, repetitive tasks, such as attending status meetings, etc. They should be there in the project plan and repeated as daily, weekly, monthly, or yearly, whatever. Right. Let me come to the task concept. मैं इधर आ गया हूँ. I will come here. Task में जाके I will select the recurring task here. What can be the task name? Let me put it as a weekly meeting. ठीक है, weekly meeting for occasion project. ठीक है, अब इसका ड्यूरेशन यहाँ पर I can put it in hours also, but फिलहाल अभी रहने देते हैं जैसा है. Let me say this is on Wednesday, every Wednesday, and recur every 1 week, right? I can make it as 2 weeks also, 1 week also. Right now I will put it as every 1 week, weekly, starting on 11 end by August 29. अब एक्चुअली अगस्त 11 में और 29 में है, कितने वेडनेसडे पढ़ रहे हैं, कोई बता सकता है? सॉरी, नहीं 2 पढ़ रहे हैं ना. अगस्त 11 तो 16 है और 23 है, 29 तो यहाँ पर है, तो 2 वेडनेसडे पढ़ रहे हैं. तो ये इसलिए आ रहा है एंड आफ्टर 2 occurrences या एंड बाय अगस्त 29. अगस्त 29 मेरा वो एंड डेट है, इसलिए आ रहा है. तो आई विल जस्ट से एंड आफ्टर लेट अस से 3 occurrences कर दूंगा, तो ये अगस्त 30 हो गया. देन आई विल से ओके, यहाँ पर मेरे बाय डिफॉल्ट डेवलप होके 3 टास्क आ गए हैं इधर. और ये जो है तो दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिस इज फॉर ए वीकली मीटिंग, मतलब रिकरिंग टास्क. इसको इफ आई सिलेक्ट हियर आई कैन कोलैप्स दिस, आई कैन एक्सपांड दिस. सो हाउ इज इट वर्किंग? 16th August, 23rd August, 30 August. So this is what a recurring task is. So far so good. Able to understand the concept? First one, what we discussed was adding the regular task. Then we have discussed about milestones. We have discussed about deadlines. We have discussed about constraints. Now we have discussed about the recurring task. Right. अभी तक if there are no doubts, then I will proceed to the next topic. Yes. ठीक है, okay. Right. Right. Now here, this is recurring task. Now this can be done as a yearly also. अब जैसे daily, weekly, monthly, yearly. I have come over here. Task 2, insert task, recurring task. You can make it as yearly task. Yearly, let us say annual dealers meeting. Microtech का जैसे हमारा हो गया ना, annual, if I can say Microtech distributors, sorry, not dealers. डीलर्स भी कह सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स मीटिंग हो गया ना, इसको ईयरली लिख दिया. अब ऑन क्या तारीख डालना है, मान लो 11 अगस्त हो रहा है या 11 तो बाय डिफॉल्ट आज का डेट लेगा, तो ये ले सकते हैं हम. एंड आफ्टर वी कैन से 2 occurrences. सो आई विल से ओके, मेरा एक 11 अगस्त का 23 का आ गया, एक 11 अगस्त 24 आ गया. नेक्स्ट ईयर
आ गया, right? So this is what you have in a recurring task. So this can be weekly also, monthly also, daily also, yearly also, or any other frequency. It can be fortnightly also. Fortnightly set करना है इसको, तो ऐसे कर सकते हैं कि इधर गए, दोबारा से टास्क, रिकरिंग टास्क, वीकली पे जाकर रिकर एवरी 2 weeks, और फिर I can mark which Friday or whichever day, whatever I wish. So I am cancelling this now, and then accordingly it will come for a fortnight also. ठीक है, this was about the so far about the recurring task. Next, so this is our status meeting should be accounted for this. Okay, highlight the cell. ये तो this we have already discussed. Task पे जाकर insert group पे जाकर, ठीक है. This we have already discussed. This is a task name you are putting, weekly, monthly, right? If in a recurring task you are coming over here, you can select a calendar also for this, but normally we don't do that. Calendar हम project को ही लगाते हैं. Now coming to this recurring task indicator is this. Yes, this indicator is the recurring task indicator. यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, this task occur 3 times between August 11th and August 30. इस पे आएंगे तो क्या लिखा है, this task occur 2 times between August 11, 2023 and August 11, 2024. So this is what the recurring task is, specific occurrence. If I collapse this, then I can see the recurring task here. See, 1, 2, 3. Able to see here? Let me just zoom it out a little bit. Yeah. Right. 1, 2, 3, 4. So one is August 16th. ये August 16th पे आ गया. One is August 23rd. One is August. इस तरह से 4 recurring task हमारे पास इनसे आ गए हैं. Right. Now, next is about the task duration. ठीक है. अभी तक we were discussing about the task properties only. Now we will discuss about the task duration. So what is task duration? It is the amount of time you expect it will take for a task to complete. Right. Now automatically scheduled tasks have a duration 1 day by default. We have seen here. If I'm adding a task here, let me say if I put a task as task 3. This is a manually scheduled task, तो इसमें कोई duration नहीं आ रहा है. If I make it as a auto scheduled task, तो इधर by default क्या आता है, 1 day और question mark. मैं जब भी automatic scheduled task को ऐड करूंगा, 1 day question mark ऐसे आएगा. तो question mark का मतलब होता है estimated. If I double click this I will get a duration 1 day question mark. This is in the advanced also, in the general also I will get the same thing. 1 day oblique question mark, ये estimated है. If I हटा दिया estimated को, तो 1 day से question mark हट जाएगा. अभी इधर question mark दिखना ना, मैं जैसे ही ओके करूंगा question mark हट गया. So this is one way of removing the question mark. या other way is कि आप इस task में directly जाके भी question mark हटा सकते हो. I will just do undo. Just hold on. I will come here. I will just make it 1 day here. ये जो up down arrows है, and I can change this to question, मतलब normal duration. So this is the thing. Manually scheduled task, you can enter duration or text values, right? That is also possible. अब मैंने इधर मान लो task 4 enter करा. Task 4. This is a manually scheduled task. अब ये जो automatically scheduled task है ना, मैं am trying to type here, like let us say ABC. So MS Project is actually scolding me. MS Project is not accepting that duration. I will say okay. I have to press escape only, then it will मतलब continue. But अब जो manually scheduled task है, इसमें मैं 1 day की जगह पर यदि मैं ABC भी डाल देता हूँ ना, ABCD, then also it is taking. Why? Because manually scheduled task का कोई project schedule पे कोई link ही नहीं होता है. And that is why I always say कि manually scheduled task you should never use in your schedules.
क्योंकि मैनुअली शेड्यूल टास्क यूज करने से आपका जो प्रोजेक्ट है इफेक्ट ही नहीं आएगा, देन व्हाट इज द यूज ऑफ पुटिंग द टास्क इन द शेड्यूल, राइट? This is the reason why we don't use manually scheduled task. But for your knowledge, I have to tell you what the manually scheduled task is. So we are just discussing that. जैसे no idea consult XYZ, ये मैं डाल सकता हूँ इधर. I will write here no idea consult XYZ. ठीक है, अब इसको मैं just I will just इधर दिख रहा है. तो ये ड्यूरेशन कॉलम में भी मैं ऐसे डाल सकता हूँ. डेट में आई विल पुट आई विश, आई विल जस्ट पुट समथिंग हियर. सो दिस इज, so that is what it is. Manually scheduled task में you can do it accordingly. Now when working in project you can use abbreviations like minutes, hours, day, week and month and so on. Now this is day, I can use it as minute also. 1 minute, MIN टाइप किया तो मिनट आ गया. Hour, 1 hour, HOUR, तो 1 hour आ गया. ठीक है, मिनट्स, आवर्स. उसके बाद डेज तो हम कर ही रहे हैं, राइट? मिनट, आवर, डे. देन 1 वीक, लेट अस से 1 वीक, तो W के वीक आ गया. देन 1 मंथ, MON मंथ हो गया. आफ्टर मंथ व्हाट डू वी हैव? ईयर, 1 ईयर. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि you can use things according to like any type of format according to what you wish. ठीक है. Now task duration. Now I think अभी तक whatever we discussed about the task has everyone understood या कोई doubt है? Because unless and until task information के बारे में आपको clear हो, it is of no use to move to task duration. कंस्ट्रेंट सबको क्लियर हो गए, डेडलाइंस क्लियर हो गया, ठीक है. टास्क एंटर कैसे करना है? ओके, नाउ लेट मी मूव टू द टास्क ड्यूरेशन. नाउ हाउ डू यू एंटर द टास्क ड्यूरेशन? क्लिक द सेल बिलो द ड्यूरेशन कॉलम एंड एंटर द ड्यूरेशंस अगेंस्ट रिस्पेक्टिव टास्क. वो जो मैंने अभी करके दिखाया है ना, दिस इज द ड्यूरेशन कॉलम, दिस इज द टास्क. आई विल एंटर द ड्यूरेशन 2 days. 2 DB ऐड करूंगा तो अपने आप में डेज आ जाएगा. I'm entering the duration here. This is how you will enter the duration here. Project also draws the Gantt bar for the task to span these many working days plus the non-working days. So it is taking 2 days as the working days and plus the non-working days also it will take. मतलब अब जैसे for example, let me just make it little, yeah. See, this is a Saturday and Sunday. अब इसमें क्या है? Project information में I have put the microtech calendar, that is a 6-day calendar. So I have to put it here also time scale में जाके non-working time में I have to make this as a project microtech calendar. Now this has become 6-day calendar. पहले दिख रहा होगा आपको Saturday भी non-working आ रहा था ना. Now Sunday is coming as non-working. So here 2 days डाला है तो इधर तक आ गया. अब 3 days डालूंगा तो ये इधर तक आना चाहिए ना, एक्चुअली तो संडे के एंड तक, लेकिन ये मंडे के एंड तक जाएगा. Why? Because Sunday is non-working. देखो, it is going through and through. और मैंने 4 डाला तो ट्यूसडे तक ही आएगा इधर. देखो 4 डाला तो ट्यूसडे तक आएगा, वेडनेसडे तक नहीं जाएगा. ये कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है समझना कि आप जब डेज डालते हो तो वो इस टास्क जो है पूरा बार जो पूरा दिखाएगा, लेकिन नॉन वर्किंग डेज को वैसे दिखाएगा. तो यही बता रहे हैं, प्रोजेक्ट ड्रॉस द गैंट बार टू स्पैन दिस मेनी वर्किंग डेज प्लस द नॉन वर्किंग डेज. व्हाट आई अंडरस्टैंड हियर, राइट? नाउ नेक्स्ट टास्क डिपेंडेंसीज पे चलते हैं. अच्छा, अब ड्यूरेशंस का क्लियर हो गया सब, राइट? एवरीबॉडी कंफर्टेबल विद द टास्क एंड टास्क ड्यूरेशंस? Actually, I think it will make more sense because abhi to you people are not having the license na. So if you have the license and you can practice, then it would be a better thing. But abhi we also don't have licenses to give you, so that is a constraint. So abhi with this class, at least you will get a general idea. Then anyone
whom the company nominates as a project manager will allocate the license. ठीक है, तो अभी task duration is done. We'll come to the task dependencies, right? Now, what are task dependencies? Task dependencies are relationships among tasks which determine the order in which activities need to be performed. Relationships among the tasks. Let me just remove this constraint here first. Relationship among the task. जैसे इन दो टास्क के बीच में क्या रिलेशनशिप है? दिस आई एम डूइंग इट विद द प्रेडिसेसर कॉलम. तो इधर आई कैन put to 1 2 3 4 5. But what is happening is this is the task number 2. This is happening after task 1. So predecessor is 1 for this. Task number 3 जो है is happening after 2. So predecessor is 2 here. Task number 4 is happening after 3. So predecessor is 3 here, and so on. Task number 5 is happening after 4. So predecessor is 4. इस तरह से चल रहा है, right? So relationship which determine the order in which activities need to be performed. Now relationship of preceding task to the succeeding task. जैसे हमने देखा ना, predecessor precedes tasks that depend on it. Next, successor succeeds or follows tasks on which it depends. Now, task can be a predecessor for one or more successor tasks. That is also possible. Now, what does this mean? कि task number 1 जो है ना, let me show you the Gantt bar also here. See, task number 1 is a predecessor for 2 only right now, but it can be a predecessor for 3 also. मैं इधर 1 टाइप कर दूंगा, तो देखो 2 एरो जा रहे हैं. ये एरो दिख रहा है, और इधर भी 1 टाइप कर दूंगा, तो जो 4 जो पहले इधर था वो 4 भी यहाँ आ गया. So one task can be a predecessor for more than one successor task, and any task for that matter. Now task can be a successor to more than one predecessor task, right? This task, it can be successor to all these tasks. Okay. Just let me introduce a successor column. 1 के लिए तो 2 3 4 हो गए ना सक्सेसर. अब मैं इधर 5 डाल दूं, इधर भी 5 डाल दूं, इधर भी 5 डाल दूं. अब ये जो टास्क 5 है आपका, ये वाला जो टास्क 5 है, ये 1 2 3 4, it is a successor to all these 4 tasks. See, all these 4 arrows are converging here. Right. Now, task can be successor to one or more. This is fine, we have discussed. Only 4 types of task relationship exist. Finish to start, start to start, finish to finish, start to finish, FS, SS, FF, FS, SS, SF. So we will discuss this here, right? ये आप note कर लो. Only note this one: task relationship. Finish to start, start to start, finish to finish, start to finish. You note these 4 types of relationships. No need to note this text. Just note this type of graph. To start is just a small, draw a small graph like this type of a chart in your book. This is for start to start. This is for finish to finish. This is for start to finish. So most common one is the finish to start dependency, and in 90% of your task you should be using finish to start dependency only. जैसे finish to start क्या होता है? Here given an example. See,
इसमें जैसे क्या होता है, determines the start dates of a successor task. Now what it means, a book chapter must be written before it can be edited. Right, unless and until I don't write the chapter for a book, I can't do the editing for that. That is what finish to chapter. This activity, we can say it will be a book chapter. This activity will be the edited. Next, this is the start to start, finish to finish, start to finish. So yeah, again, these three I don't use in my scheduling, and this should sparingly be used. 90 to 95% or maybe 100% if possible. Always use finish to start, only the first one. This also you can note down separately. So far, so good. Everybody able to follow? Yeah. Note down कर लिया सबने? Yeah, fine. ठीक है. Next, right. I think this is clear to everyone. Task dependencies क्या होते हैं? Finish to start, finish to finish, and start to finish. Right. Now, let me move on to the next. What happens here is the link line indicates a relationship. जो हमने देखा ना, finish to start. This is the link line. Right? इधर देखो task link लिखा हुआ है ना, finish to start. Alternate vendor identification से cost negotiation and ECR note. This is alternate vendor negotiation. This is cost negotiation and ECR note. So this is the bar which represents the duration from 15 or to 19 तक. This is from 11 to 15 August. So 11 कहाँ पर है हमारा? ये रहा. 11, 12, 13, 14, 15. Right. This is the timeline. If you see here, the duration is also coming. And this is the link will represent the date. Right. Now, method 1 is select the names of the task you have to link. On the task tab, click link task. ये मैंने करके दिखाया था आपको पहले. तो मान लो these two tasks I have to link. On the task tab, click the link task button. Now read this, what is written here. Link the selected task. You can link task so that one can't start until the other has finished. Right? You can also link task in such ways that start to start link and two tasks need to start at the same time. I'll select this. But let me go to scroll to task. Right. अब ये after this two tasks are linked. So 3 cannot start until this 2 is finished. This is how we have done the link task button. This is the first method. Next, method 2. In predecessor column, simply enter the task ID to create finish to start link. जो अभी हम अभी तक कर रहे थे. This is successor column. I'll just knock this column off. I'll put in the predecessor column. 6 and 14 is there here. So 15 के लिए I have put 14. 14 के बाद यहाँ हो रहा है. 14 को I will put it as, let us say, 13. So this is getting linked to 13. Scroll to task. Right. And 2 के लिए I will put it as 1. Then I will again come back to scroll to task. See, it is coming here this way. Or I can select these tasks and click on link task. So automatically these tasks are getting linked. So this is how my demo project is going on. Right. Now create links for finish to start, enter predicting task ID followed by initials. ये SS, FF और SF ये भी कर सकते हैं हम. जैसे if I'm putting just 1 here, then what is happening here? It is only taking a finish to start link. But if I want the start also to happen at the same time, I can put it as SS.
like let us say 3 start to start. See now these two tasks are starting at the same time. Can you see this here? If I come back to the old slide, let me to highlight this better. एक स्लाइड और पीछे देखो, ये दिख रहा था ना आपको स्टार्ट टू स्टार्ट, ये सेम चीज इधर हो गई स्टार्ट टू स्टार्ट, राइट. अब फिनिश टू फिनिश आई विल डू लाइक दैट. ये दोनों का फिनिश एक साथ हो रहा है. वो कैसे होगा? 3SS फिनिश टू फिनिश, राइट. इधर हम आ गए, स्क्रॉल टू टास्क. ये देखो इधर फिनिश टू फिनिश दिख रहा है ना. इसको I will increase the length. Let me remove these links. See, this is finish to finish, right? What we were seeing it here. So this is how you will see the finish to finish. Start to finish should not be used in scheduling. It's just a provision they have given. So we have come over here. So this also we have seen. To create task other than FS, enter preceding task IDs followed by the task type SS, FF or SF. Right. तो ये मॉड्यूल 4 जो था आपका काफी हैवी मॉड्यूल था. So I think this is fine. Now last we are coming to the critical path. What is the critical path? It's a series of tasks that will push out the project's end date if the tasks are delayed. Right. This everybody knows. Yes. Likely to change from time to time as tasks are completed ahead of or behind schedule. अब मेरा टास्क यदि शेड्यूल से पहले हो जाता है तो क्रिटिकल पाथ फिर भी चेंज होगा. टास्क बाद में होता है तो भी क्रिटिकल पाथ चेंज होगा. एंड शेड्यूल चेंजेस सच एज चेंजिंग टास्क रिलेशनशिप्स कैन आल्सो अल्टर द क्रिटिकल पाथ, राइट. अब टास्क रिलेशनशिप और ड्यूरेशंस, नाउ एवरीबॉडी नोस व्हाट इज अ टास्क रिलेशनशिप, राइट. दीस आर द टास्क रिलेशनशिप्स जो हम इसमें डालते हैं, एंड दीस आर द टास्क ड्यूरेशन. They can also alter the critical path. Now next, after a task on the critical path is completed, it is no longer critical. क्योंकि एक बार टास्क कंप्लीट हो जाता है तो क्रिटिकल हो नहीं सकता है वो. Free slack is the amount of time it can be delayed before it begins another task. Now slack and float both mean the same thing. आपने float term सुना होगा ना project management में. There are two types of float. One is free, one is total float. So free float is the amount of time where it is between two tasks only, and total float is for the entire project. It's before it begins the completion of the entire project. This is the difference between free float and total float. Yes, sir. Okay, now let me come to the next. Now to view the critical path, right click in the Gantt area. You come over here. Let me just, yeah. Right, or I can go to Gantt chart and I can say critical task. I can do this like this also. Automatically I can see the critical tasks. Yes, sir. So what happens is the task show hide bars, they are shown in the red color. Show or hide में जाके this way. Or I can come here, I can say show or hide bar styles critical task. Show or hide bar styles critical task. बिकॉज ये शेड्यूल ही हमारा गलत बना हुआ है क्योंकि हमने इसमें एक के बाद एक रखा ही नहीं, तो क्रिटिकल टास्क आएगा नहीं. बट लेट मी जस्ट रिमूव दिस, ओके, एंड लेट मी डिलीट दिस. अब मैं इन सबको एक साथ लिंक करता हूँ. आई विल लिंक देम टुगेदर एंड राइट नाउ इट इज अंडर ब्लू कलर, राइट. नाउ आई विल जस्ट कम हियर, शो और हाइड बार स्टाइल क्रिटिकल टास्क. Okay, critical task, it is not showing under red color. Okay, what is the issue? Format bar styles. Let me check. Critical है तो सही इसमें red color में, but it is not showing. Anyways, ठीक है. So we have seen that they are normal. This okay. So this is the end of this module. End of module 4. So any queries till now? I think this module is for everybody. And in this we have covered mostly 90% of the things what you will be required to do in a particular project. So this is a good amount of, this is a good discussion.
which has happened on the task management, task dependencies, task constraints, and task durations, right? And about the task behavior. Any doubts so far in this? ठीक है. Shall we have a 5-minute break? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So अभी right now it is 3:37. We will meet at 3:42. Okay, sir. Right? Done. Fine. Thank you.
हेलो, इसको भी पसंद है टीचर इसको। हेलो सर। या हेलो एवरीवन बैक, राइट? ठीक है, एक्सक्यूज सर। तो अभी we will just discuss this module 4 once again for the last 5 minutes, just for a recap. एक्सक्यूज मी सर। सॉरी, कोई कुछ बोल रहा था? सर हमें पीपीटी मिल सकती है ये वाली, मतलब इसकी। पीपीटी ये एक्चुअली आप राजीव सर से डिस्कस कर लो, ओके सर। तो मिल जाएंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबका पीपल स्ट्रॉन्ग का वो है, लॉगिन आईडी है? पीपल स्ट्रॉन्ग का लॉगिन आईडी नहीं है? नो सर। ठीक है, ठीक है, मैं राजीव सर को शेयर कर दूंगा, आप उनसे ले लेना। थैंक यू सर। राइट राइट, मिल जाएंगी, सबको मिल जाएंगी, नो इश्यूज। तो जैसे टास्क 4 हमने ये मॉड्यूल 4 में टास्क प्लानिंग देखा था, तो वी हैव सीन न्यू टास्क कैसे इंसर्ट करते हैं, फर्स्ट वी हैव सीन दैट। तो आफ्टर दैट वी हैव सीन द टास्क इंफॉर्मेशन। Task information was double clicking the task, you will find the task information. फिर constraints हमने देखे हैं, 3 types of constraints, उसमें further breaking down there are 8 types of constraints. And then deadlines. Deadline or constraint में there is a difference, because constraint will actually nail your activity, deadline will not nail the activity, it will just give a indicator in your activity, right? Now next is setting the task properties, task information. Recurring tasks, recurring tasks we have seen कि जैसे एक task, जैसे if you have a project status meeting and if you want to repeat it on a daily, weekly, monthly or yearly or even fortnightly basis or whatever, or even thirds of months, वो भी possible है। मतलब जैसे ना, there is a lot of flexibility here. Let me say if I come here, task पे जाके recurring task पे मैं गया, monthly तो कर लिया, weekly, recur every 3 weeks। अब 3 weeks एक ऐसी चीज है जो मतलब हाफ मंथली, मतलब बाई मंथली भी नहीं हुआ और मंथली भी नहीं हुआ, तो रिकर एवरी 3 वीक मैं कर दूं वेडनेसडे। लेट अस से इट इज स्टार्टिंग ऑन अगस्त 11 और एंड आफ्टर 17 occurrences, जस्ट फॉर एग्जांपल। यहाँ देखो, आई हैव नॉट टाइप्ड एनीथिंग इन द टास्क, तो इसलिए 1 से ये देखो अब ये कैसे आ रहा है, अगस्त 16 आ रहा है, इस ईयर अगस्त 16। उसके बाद में क्या आ रहा है, 1 2 2 वेडनेसडे रुक के तीसरा वेडनेसडे 6 सितंबर को आ रहा है, फिर 1 2 तीसरा वेडनेसडे 27 सितंबर आ रहा है। सो आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसा नहीं कि जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना ही करो, मतलब यदि जिसको भी सॉफ्टवेयर का एक्सेस बाद में मिले, आप उसमें अपने आप से और प्रैक्टिस करो, एक्सप्लोर करो। तो ये चीज है, रिकरिंग टास्क हो गए, दिस वी हैव सीन। नेक्स्ट थिंग इज टास्क ड्यूरेशन। टास्क ड्यूरेशन में हमने ऑटोमेटिकली और मैनुअली शेड्यूल टास्क देख लिए हैं, राइट? ये आपने देख लिया है। अब टास्क डिपेंडेंसीज आपको क्लियर हो गए हैं कि टास्क डिपेंडेंसीज में 4 तरह के होते हैं, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश, राइट? ये दिस इज व्हाट वी हैव सीन हियर। इसके 2 मेथड है लगाने के। पहले मेथड में तो क्या है, यू कैन लिंक द टास्क, लिंक टास्क का बटन है उससे। दूसरे मेथड में आप प्रेडिसेसर के कॉलम में डाल सकते हैं। पहले मेथड में मैंने क्या किया था, यहाँ जाकर इनको मान लो सिलेक्ट करके लिंक टास्क कर दिया, और दूसरे मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेडिसेसर में टाइप कर रहा हूँ। इधर जैसे मैंने टाइप कर दिया 1 2 3 4 5 टाइप कर दिया, ठीक है। दिस वाज वन। नेक्स्ट इज क्रिटिकल पाथ, आपने देख लिया क्रिटिकल पाथ कैसे है। ओके, दिस वाज द थिंग। तो पीपीटीज आपको मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अभी तक हमने 4 मॉड्यूल कवर करे हैं,
चारों मॉड्यूल के पीपीटीज आपको मिल जाएंगे। अभी तक का कोई डाउट है किसी उसमें आपने जो चीजें लिखी हैं जो No, sir. चलो ठीक है। सो लेट मी मूव ऑन टू द मॉड्यूल 5, राइट? So I think task planning is now clear to everyone. What is actually task planning? Next one will be your resource planning and assignments, right? Okay. This task is over. Let me come to the resource planning. Now, resource में कैसे होता है? Resource types. First, you have to build a project team. You have to view the resource availability, view the assignments, add resource. ये resource planning हो गया. How you will assign the resources and level the over allocated resources, right? Resource. अब resource क्या होते हैं? Anything and everything which is required to complete a task. अच्छा, अब एक चीज अभी है, resources are of 3 types. ये आप लिख सकते हैं, वर्क, मटेरियल एंड कॉस्ट। 3 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। ये आप नोट डाउन, ये इसमें दे नहीं रखा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, वैसे बता रहा हूं मैं। तो ये चीज आप लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। रिसोर्सेज आर ऑफ 3 टाइप्स, वर्क, मटेरियल एंड कॉस्ट। ठीक है। नाउ यूजिंग प्रोजेक्ट ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो? डेटाबेस ऑफ रिसोर्सेज मेंटेन कर सकते हो। तो मेंटेनिंग कॉस्टिंग एट पैरामीटर और पर आवर फिक्स कॉस्ट। पर आवर कॉस्ट जो होता है वो वर्क रिसोर्सेज के लिए होता है, वो मटेरियल और कॉस्ट रिसोर्सेज के लिए नहीं होगा। नाउ यू विल allocate resource based on unit availability, fully available या partially availability. This also you can do. जैसे वर्क रिसोर्स है, अब वर्क रिसोर्स एक रिसोर्स पर डे मान लो 8 से 9 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। हम इसके अंदर जब वर्क रिसोर्स डिफाइन करेंगे, वैसे हो सकता है कई बार कई रिसोर्स हम में से 8 से 9 घंटे से ज्यादा हम 12 घंटे भी काम करते हैं, बट इसके अंदर हम डिफाइन 8 आवर्स ही करते हैं। इसके अंदर हम 12 घंटे या 11 घंटे वैसे नहीं करते डिफाइन, हम 8 आवर्स ही डिफाइन करते हैं, राइट। तो अब ये वर्क, मटेरियल, कॉस्ट, 3 चीजें आप लोगों ने सबने नोट कर ली, Yes, sir. राइट। अब हम इस पे आते हैं, कमिंग टू दिस, how you will maintain the resource pool, allocate resources to task, view resource graphs and work allocation. ठीक है। हाँ, ये रहे वर्क, मटेरियल एंड कॉस्ट, 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, वर्क रिसोर्सेज क्या होते हैं? पीपल एंड इक्विपमेंट नीडेड टू कंप्लीट टास्क इन ए प्रोजेक्ट। वर्क में नॉर्मली पीपल होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इधर आता हूँ, इस पे आता हूँ शीट पे, यहाँ 4 बटन दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट इज गैंट चार्ट, दूसरा टास्क यूसेज, तीसरा टीम प्लानर, चौथा रिसोर्स शीट। I will come here to the resource sheet. तो resource sheet में I am going to the resource button, add resources, build team from enterprise. ये enterprise से resources आ रहे हैं। If I'm adding here Varun Gupta, I will say okay. Varun has come here. अब इसमें क्या हो रहा है? Maximum units is 100%. ग्रुप ईयर दे रखा है वर्क, दिस इज वर्क रिसोर्स, लाइक वरुण कुमार गुप्ता आया है वर्क रिसोर्स। वर्क रिसोर्स में क्या होता है, मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा ना तो रिसोर्स इंफॉर्मेशन आ गया, राइट। टास्क पे आपने डबल क्लिक किया था तो क्या आया था? टास्क इंफॉर्मेशन। अब रिसोर्स पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो रिसोर्स इंफॉर्मेशन आ गया। यहाँ पे देखो मेरा ईमेल आईडी आ रहा है varun.gupta और ये लॉग ऑन अकाउंट और रिसोर्स नेम। बट इफ आई ऐड समथिंग like let us say if I add inverter, और ये वर्क रिसोर्स नहीं होगा, ये मान लो मटेरियल रिसोर्स होगा। तो मटेरियल रिसोर्स में यहाँ पर if I'm trying to type also something, I am not able to type in the units, सिर्फ इसका स्टैंडर्ड रेट आएगा बस। So that is the difference between the work resource and the material resource. Let me explain this further in detail. तो वर्क रिसोर्स में क्या होता है? पीपल एंड इक्विपमेंट नीडेड टू कंप्लीट ए टास्क इन ए प्रोजेक्ट। कॉस्ट रिसोर्सेज मतलब जैसे मान लो इफ इट्स योर ट्रेन टिकट्स, लेट अस से दिस विल बी योर कॉस्ट रिसोर्सेज। दिस इज ए लाइक वन टाइम कॉस्ट। ये आपके वर्क में भी नहीं आएगा, मटेरियल में भी नहीं आएगा, दिस इज योर
cost resources, right? अब ये आपका इधर इसमें इधर कुछ भी कॉस्ट नहीं डिफाइन हो रहा है, मतलब दिस इज कॉस्ट रिसोर्स. इसमें कैसे है, दे रिप्रेजेंट ए फाइनेंशियल कॉस्ट associated with a task that you need to account for. जैसे इधर examples like travel, entertainment and so on. Now material resource क्या होगा, they are consumables that you use up as the project proceeds. These are the material resources which are the consumables. जैसे we can say this can be, if I as the project proceeds, a construction project might require steel or concrete. चलो let me take the example of concrete. That will be easier to understand, right? Let me दे रखा, so that's it. तो वर्क मटेरियल कॉस्ट 3 तरह के रिसोर्स है. अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस, मैं इस पे आ रहा हूँ. वर्क पे मैंने दिखाया इधर ईमेल आईडी है, ये सब है, राइट? कॉस्ट में जैसे आई कैन डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हियर. अब जब मैं मटेरियल पे आता हूँ तो यहाँ पर जनरल पे आ रहा हूँ, तो ये यहाँ पर आई एम ट्राइंग टू टाइप आल्सो, नथिंग आई एम एबल टू टाइप, राइट? बिकॉज इट वोंट मेक सेंस, राइट? मटेरियल का कोई ईमेल आईडी तो होगा नहीं, राइट? तो इसलिए यहाँ पर ईमेल जो है वो ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ नहीं डाल सकता, लॉगिन अकाउंट में भी कुछ नहीं डाल सकता. सेम वे ट्रेन टिकट्स जो कॉस्ट है, इसमें भी मैं ट्राइंग टू क्लिक किया, कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका भी ईमेल आईडी होगा नहीं. ट्रेन टिकट का कोई ईमेल आईडी होता नहीं है, सिर्फ वर्क रिसोर्स का ईमेल आईडी होगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि वर्क, कॉस्ट और मटेरियल टाइप, 3 टाइप ऑफ रिसोर्स में से आप जो इनपुट कर रहे हो डेटा, you have to be very careful in selecting the type of the resource. If it's people or equipment, then you have to select it as a work resource, or if it is a consumable, it should be material resource. If it is a financial cost, it should be a cost resource. तो यहाँ तक सबको क्लियर है? Right. Now next, skill based resources. This is used to identify what skills required to do particular task, actual named later when available. तो ये स्टैंडर्ड वर्क इसका फायदा नहीं है, और इसको प्रोजेक्ट ऑनलाइन में यूज करते हैं. स्किल बेस्ड रिसोर्सेज का मतलब जैसे हो गया वरुण कुमार गुप्ता की जगह पे आई विल पुट इट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, दैट वे. दोज आर द स्किल बेस्ड रिसोर्सेज. या फॉर एग्जांपल आई विल, जैसे रामू शामू हो गए, तो इंस्टेड ऑफ रामू आई विल पुट इट एज ए कारपेंटर. कारपेंटर विल बी ए स्किल बेस्ड रिसोर्स. यहाँ देखो ये भी आ रहा है, दिस इज ए लोकल रिसोर्स, लोकल रिसोर्स, लोकल रिसोर्स, एंड दिस इज ए एंटरप्राइज रिसोर्स. तो लोकल और एंटरप्राइज रिसोर्स में क्या फर्क है, इसके बारे में कोई बता सकता है? लेट मी डिस्कस दिस थिंग फर्स्ट, क्योंकि लोकल रिसोर्स में और एंटरप्राइज रिसोर्स में फर्क यदि नहीं पता होगा तो हम रिसोर्सेज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. Okay, let me touch that point first then. Let me come to the enterprise part. मैं प्रोजेक्ट सेंटर पे आ रहा हूँ, इधर सर्वर सेटिंग्स पे जाऊंगा, right? Let me come to the resources here. These are the enterprise resources. ये मेरे जो सर्वर पे डिफाइंड है, ये सारे एंटरप्राइज रिसोर्सेज हैं. All of these are the enterprise resources, right? Local resource का मतलब ये है, they are only for that particular project. उस प्रोजेक्ट के लिए जो है ये लोकल रिसोर्स है. कंक्रीट जो है मेरे एंटरप्राइज में नहीं है. वरुण कुमार गुप्ता इज देयर इन द एंटरप्राइज. ट्रेन टिकट या कारपेंटर एंटरप्राइज में नहीं है. यहाँ पर मैं इधर कंट्रोल F करता हूँ, वरुण ढूंढता हूँ. अच्छा, इसमें वैसे नहीं आ रहा है. If I just scroll down, here there is Varun Kumar Gupta, right? But यदि if you try to search for concrete, train tickets or carpenter, you will not find it in this. ये मैंने अभी इस प्रोजेक्ट में डिफाइन करा है. So that is the difference. These are the skill-based resources. Okay, next coming to building a project team. इसमें आपको रिसोर्स की अवेलेबिलिटी देखनी है, व्यू असाइनमेंट्स एंड ऐड रिसोर्स. नाउ बिल्डिंग ए प्रोजेक्ट टीम कैसे करेंगे? एक आप प्रोजेक्ट खोलोगे, जैसे मान लो इफ आई विल जस्ट ओपन दिस प्रोजेक्ट, द सेम Kaizen project I am opening it in the enterprise. One thing is I have built it from here.
in this I have come to this add resources, build team from enterprise. This is one method. Another method is I will just check it in here first. Demo project Kaizen को बंद कर दिया मैंने यहाँ पर, और अब मैं इसको यहाँ पे खोल रहा हूँ. Page, I'll come to this, select this, edit in browser. नाउ देखो, अब ये मेरे वही सारे टास्क आ गए जो मैंने उसमें ऐड करे थे, स्टैंड अलोन वर्जन, मतलब ये डेस्कटॉप क्लाइंट में जो ऐड करे थे वो सारे टास्क यहाँ पर आ गए. आई विल कम टू बिल्ड टीम हियर. बिल्ड टीम पे यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ. तो यहाँ पर देखो, कारपेंटर, कंक्रीट, ट्रेन टिकट्स, वरुण, ये 4 रिसोर्स थे ना उसमें. ऑल दीज 4 रिसोर्सेज आर हियर. सेम वे यू हैव टू कम टू बिल्ड टीम, और यहाँ पर मैं टाइप सिलेक्ट कर लेता हूँ. मान लो अभिषेक राय, ABC या अमित पांडे, अमित कुमार. These resources I want to add, I will say add here. They will get added here. Then I have to say save and close. It's saying save completed successfully. अब ये हो गया. It has come back to the original schedule. Now what I will do, I will come here. I will say publish. It is saying processing, saving your project. Publish. I will say close. Check it in. Right. इतना हो गया. Now let me open this project here. Open in the desktop client. अभी मैंने वहां पर दिखाया था, मैं वापस डेस्कटॉप क्लाइंट में दिखा रहा हूँ आपको. Show me the list of projects. It is demo project Kaizen. Read or write mode. Open कर दिया इधर. Right. अभी मैंने जो 3-4 रिसोर्स ऐड करे थे, ABC, अमित कुमार, अभिषेक, अमित पांडे, ये सब इधर भी आ गए ना. So this is what it is. So ये बिल्ड ए प्रोजेक्ट टीम ऐसे है. तो आप चाहे वहां करो या यहाँ करो, बट पब्लिश करना जरूरी है. ठीक है. बिल्ड ए प्रोजेक्ट टीम में व्यू अवेलेबिलिटी. अच्छा, आप अवेलेबिलिटी भी देख सकते हो रिसोर्स की. जैसे ये अवेलेबिलिटी है ना, कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी है, तो वो कैसे देखेंगे आप. अब मैं इसको इधर बंद करता हूँ, चेक इट इन करके. आई विल कम बैक टू दिस प्रोजेक्ट हियर. Demo project Kaizen. Let me select the resources. Okay, let me go back. Edit in browser. Build team. Right. Once you come over here, then view the availability. मान लो एक रिसोर्स है अभिषेक भट्ट. I want to see the availability. How I will do? I will go to the capacity planning. इधर है ना बटन कैपेसिटी प्लानिंग का. इधर मैं देख रहा हूँ ये 8.5 आवर्स 8.5 आवर्स अवेलेबल है. ये इसकी कैपेसिटी है रिसोर्स की. दिख रहा है आपको? ये अवेलेबिलिटी भी है, ये कैपेसिटी भी है. वरुण जी, एक अपडेट था. वरुण जी, क्या अभी आज के सेशन को यहाँ क्लोज कर सकते हैं क्या अभी? हाँ ठीक है सर. है ना, एक थोड़ा फायर का प्रैक्टिस कराना है इनको, वो शेड्यूल था. हाँ ठीक है सर. ओके, है ना, तो हम इसको कल से दोबारा आगे कर लेंगे. ठीक है. तो अभी हमने मॉड्यूल 5 का स्लाइड नंबर 8 तक करा है. तो मॉड्यूल 4 मॉड्यूल्स हो गए हैं, 4.5 मॉड्यूल्स. मॉड्यूल 5 को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा अभी?
नहीं सर कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, नॉट एन इशू, क्योंकि फिर अभी जब कुछ और शेड्यूल्ड है तो दिस विल डू टुमारो, कोई इशू नहीं है। ओके ओके। ठीक है, तो बस इनका फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग होना था, तो वहां पर वो फायर के पर्सन आ रखे ट्रेन के लिए, इसलिए मैं बीच में रोकने आया था। हाँ ठीक है सर, नो इशू। तो कल का आप देख लीजिए, मतलब टाइम जो है डिसाइड कर लेते हैं, और आप और मैं बात कर लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे हम लोग। राइट सर, राइट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लीजिए। हाँ, इनको फ्री कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू राइट, थैंक यू एवरीवन। और सर इनको पीपीटीज मांग रहे थे ये, तो मैं पीपीटीज आपको शेयर कर दूंगा। आप मतलब आपके थ्रू इनको